Hi, welcome to the next class. Negative sentences. Passive voice for future tense. Part 3 of 3. Perfect for negative sentences. Method. O stands for objects. मफूल जिस पर काम किया जाए. On which an action is performed. उसके बाद will या shall में से एक आता है, उसके बाद not आता है, फिर have आता है, फिर been आता है, फिर verb की थर्ड फॉर्म और फिर फुल स्टॉप. तो पहला सेंटेंस है हमारे पास, मरीज का ऑपरेशन नहीं किया जा चुका होगा. द पेशेंट will not have been operated. मरीज का ऑपरेशन नहीं किया जा चुका होगा. द पेशेंट विल नॉट हैव बीन ऑपरेटेड. खराब अंडे फेंके नहीं जा चुके होंगे. rotten eggs थोड़ा ख़राब हो गया, क्लीन कर लें. rotten eggs will not have been thrown away फिर देख लें एक दफ़ा. ख़राब अंडे फेंके नहीं जा चुके होंगे. rotten eggs will not have been thrown away. उसके बाद है हमारे पास सेंटेंस, उसे नौकरी पर रखा नहीं जा चुका होगा. he will not have been employed. 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 उसे नौकरी पर नहीं रखा जा चुका होगा. he will not have been employed. और ये फार्मूला और मेथड के मुताबिक है या नहीं एक दफ़ा देख लेते हैं. ये ऑब्जेक्ट है पेशेंट और विल नॉट हैव बीन ऑपरेटेड और फुल स्टॉप. तो हमारा मेथड और फार्मूले के मुताबिक है. मेथड और फार्मूले के मुताबिक ही काम किया करें. इसके बगैर काम करना बिल्कुल यूजलेस है. नो यूज़ ऑफ डूइंग इंग्लिश टेंसेज एंड ट्रांसलेशन एंड ग्रामर without method and formula. Same like as methods are used in mathematics and everything, it means everything has some pattern or method or rules. These are the basic rules before starting the tenses and translating into Urdu tenses or Hindi Punjabi sentences. Before doing the Urdu, Punjabi or Hindi sentences into English, we must follow the methods. There must be some method, so it will be helpful for you. और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो if you want to ask me some question in the comment box, you can come and you can subscribe my channel. And I have seen some people watch my videos. We work hard to show you, to make it easy for you while sitting at home, but you don't subscribe. That is not good. I hope you subscribe.